students, a very good morning to you. How are you? I hope you all okay and doing your work properly. So at first students, a very thanks to all of you. You are sending your homework regularly. That's why I am very thankful to you. My dear students, please use your time. This is the time to do your study. This is the best time, and if you study in this time, then you can reach to your goal. You can do everything in future. So students, care for it and always watch the videos carefully, and while you are watching the videos you should follow your book also. If any points is skipped, then you can find out that point. If you have any query or doubts, then you can ask us anytime. We are ready to clear your concept or to clear your doubt. So students, now let's proceed our chapter 13 of class 11, that is photosynthesis in higher plants. As you know that in my last class I have told you about photosystem 1, photosystem 2 and breakdown of water. So today we will start the topic from photolysis of water. Clear? So our topic is photolysis of water. Photo means light and lysis or lysis means splitting, means when water breaks in the presence of light, that is called as photolysis of water. Clear? So during photolysis of water, which takes place in the photosystem 2. As you know that there are two photosystems, one is photosystem 1 and another is photosystem 2. So photolysis of water takes place in photosystem 2. We can say it is associated with photosystem 2. And this is located in the inner side of the thylakoid membrane. While you are studying the chapter 8 cell, then you see the thylakoid membranes inside the chloroplast, how they are arranged. So in thylakoid, the pH2 is associated and the breakdown of water occurs. So when two molecules of water breaks, it gives 4 protons and 4 electrons. Now the question is, from where the 4 protons and 4 electrons come? As you know that the hydrogen has valency 1 and the oxygen has valency 2. So here we take 2 molecules of water, means 2 molecules of water contains 4 hydrogen, and from 4 hydrogen 4 proton is released. How many proton? 4 proton is released. And from oxygen, which is 2 molecules here, as the valency of oxygen is 2, so 2 2s are 4, so 4 electron is also released. So during the breakdown of water or photolysis of water, it gives 4 protons and 4 electrons. It is associated with pH2, as I have explained you earlier that the splitting of water takes place in photosystem 2, and that is located in the inner side of the thylakoid membrane. Next, the electrons are used to replace the electron lost by pH2. Again, why the breakdown of water takes place in pH2? Because while the electrons get lost from pH2, it is again fulfilled by the electrons they are released during the breakdown of water. Clear? So what happened? Again, the oxygen released from breakdown of water goes to the atmosphere, whereas the proton is accumulated in the lumen of thylakoid. Suppose this is thylakoid. Clear? The electron is released outside, means in the form of oxygen, and the protons are come towards the inside. This is the lumen and this is the thylakoid membrane. This is the thylakoid membrane. Electron is released in the form of oxygen to outside, whereas proton is come towards the lumen of the thylakoid membrane. Clear? Next, we will study electron transport. As we have studied about photolysis of water in our previous classes, but still we need to understand here. Why? Because we are going to start electron transport. So to understand the electron transport very clearly, we need to have to understand where the electrons come from. Clear? So let's see how electron transport system takes
place in higher plants. As we know that in photosystem 2, reaction center chlorophyll A. The reaction center is always chlorophyll A, means the reactions, all the reactions, during photosynthesis, the reactions takes place in chlorophyll A, and chlorophyll A associated with PH2, or we can say PH2 is associated with chlorophyll A. Suppose this is chlorophyll A and here PH2 is associated. And after this, what happens? The electron become excited and jump to orbit further from the atomic nucleus. Means the electron have to excited. Excited means they are so active that they can jump from one medium to another medium which is very far from the nucleus. As we know that inside the nucleus electron and proton are present. So these electrons need to excite or need to jump from one medium to another medium. So the whole scheme, as we are studying about electron transport system, and here we are studying about jet scheme or non-cyclic photophosphorylation. So let's understand what is photophosphorylation. Photophosphorylation means releasing of ATP and NADPH during photosynthesis. Releasing of ATP and NADPH during photosynthesis. So how this process occurs? This is whole scheme of ETS. ETS means Electron Transport System. You can see the diagram. This diagram represents the electron transport system that start from PH2, means photosystem 2, appeal to primary electron acceptor, means after breakdown of water in photosystem 2, the electron released are moved in upward direction like this. That's why this is called as uphill. Uphill means where ATP is used to release these electrons in upward direction to primary electron acceptor. Here, when the electrons move in upward direction, the primary electron acceptor is present that accept the electron, and downhill to cytochrome complex means after accepting this electron, that electron is again come downward. Why? Because here the cytochrome complex or PS1 is associated. Dear students, I want to tell you another thing. PS2 can release electron, but it can't use the electron directly. That's why the electron that is produced in photosystem 2 needs to be transferred to photosystem 1 for the production of ATP and NADPH. So how this produce? We will understand this. So let's see that downhill to cytochrome complex and PS1, excitation of PS1, transfer of electron appeal to another acceptor, and finally to NADPH plus, and is called as jet scheme. So dear students, if you notice the diagram, it looks like a jet scheme. Here like this, then this come like this and this. Or you can say this is a jet. This is a jet. So this type of structure during electron transport is called as jet scheme because of the characteristic shape of jet formed when all the carriers are placed in the sequence according to their redox potential value. Dear students, मैं अभी आपको हिंदी में समझाती हूँ कि आपने पढ़ा क्या. ठीक है, तो पहले मैंने आपको फोटोलिसिस ऑफ वाटर के बारे में बताया. क्यों जानना जरूरी था फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जबकि आपको पता था फोटोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब होता है लाइट की प्रेजेंस में वाटर का ब्रेक होना. और जब लाइट की प्रेजेंस में वाटर का ब्रेकडाउन होता है तो वाटर ब्रेक होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में. जो प्रोटॉन है वो हाइड्रोजन से रिलीज होता है क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन से रिलीज होता है क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है. तो ये जो वाटर का स्प्लिटिंग होता है, हमें पता है दो फोटो सिस्टम्स होता है. एक होता है फोटो सिस्टम 1, दूसरा होता है फोटो सिस्टम 2. तो ये जो वाटर का ब्रेकडाउन है ये फोटो सिस्टम 2 में ही क्यों होता है? क्योंकि फोटो सिस्टम 2 जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन को भेजता है फोटो सिस्टम 1 में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए वाटर का ब्रेकडाउन होता है और कंटिन्यूअसली फोटो सिस्टम 2 की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है. तो ये हो गया आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर. फिर बोल रहे हैं कि जो
है वो बाहर निकल जाता है, और जब ऑक्सीजन बाहर निकलता है उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन निकलता है। और जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन क्या करता है, जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है क्लोरोफिल के अंदर, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन से बाहर जाता है ऑक्सीजन, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर आता है प्रोटॉन, मीन्स इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, H+ comes inwards whereas O- or we can say as E- electrons goes outward. So then I have told you about electron transport system. You can see this is the light harvesting complex and this is PS2, photo system 2. As you know that, sorry, जैसे कि आप जानते हो फोटो सिस्टम 2 का जो मैक्सिमम एबिलिटी होता है लाइट को ट्रैप करने की वो है 680 नैनोमीटर। तो 680 नैनोमीटर रेंज की लाइट को फोटो सिस्टम 2 ट्रैप किया। कैसे ट्रैप किया, ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हो क्लोरोफिल ए में प्रेजेंट है। बेटा याद रखो क्लोरोफिल ए में फोटो सिस्टम 1 भी प्रेजेंट है, फोटो सिस्टम 2 भी प्रेजेंट है, पर फोटो सिस्टम 2 में जो वाटर का ब्रेकडाउन होता है वो इनडायरेक्टली पहुंचता है फोटो सिस्टम 1 के पास, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को फोटो सिस्टम 2 डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता है। यहाँ पे आपको ये सेंटेंस ध्यान देना पड़ेगा, भले ही फोटो सिस्टम 2 में वाटर का ब्रेकडाउन होता है पर ये इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, तो ये इलेक्ट्रॉन को भेजता है कहाँ, फोटो सिस्टम 1 के पास। तो जैसे ये फोटो सिस्टम 1 के पास भेजता है तो यहाँ पे एटीपी बनता है। याद रखो मैंने बोला था फोटोफॉस्फोरिलेशन में एटीपी और एनएडीपीएच बनता है। तो एटीपी कैसे बनेगा, फोटो सिस्टम 2 की वजह से एटीपी बना, क्योंकि इसने जो इलेक्ट्रॉन भेजा वो इलेक्ट्रॉन को यूज करके एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो गया एडीपी के साथ, जिसकी वजह से एटीपी बना। पर जब डायरेक्ट फोटो सिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, यहाँ पे भी ब्रेकडाउन हुआ, पर यहाँ पे जो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ वो अपहिल डायरेक्शन में मूव किया, और मूव करने के बाद यहाँ पे जो NADP था, NADP को रिड्यूस कर दिया NADPH में, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया ATP और NADPH। तो अब देखते हैं, ये है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली लाइट को ऐसे रिसीव किया। लाइट को जब रिसीव किया यहाँ पे वाटर का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है, और वाटर का ब्रेकडाउन होके 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन मिल रहा है, और ऑक्सीजन गया अपना एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपहिल डायरेक्शन में मूव करेगा, और यू कैन से इन द अपवर्ड डायरेक्शन। नाउ द इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। जब ये मूव करेगा, यहाँ पे ये जो आप पूरा का पूरा सेंटर देख रहे हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर, जो साइटोक्रोम जो कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद क्या करेगा, ये ट्रांसफर करेगा दोबारा से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। तो फिर ये कहाँ पे आ गया, LHC में आ गया, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के थ्रू होते हुए। यहाँ पे भी फोटो सिस्टम 1 जो लाइट रिसीव किया था उससे भी इलेक्ट्रॉन मिला, और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन मिला, तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, एक तो बना दिया ATP और दूसरा बना दिया NADPH। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो ATP और NADPH फॉर्मेशन हुआ उसको फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ATP और NADPH बना, इसको यूज करता है प्लांट फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। सो इन दिस होल प्रोसेस यू कैन सी, if you see then it looks like a Z structure, if you write then it will looks like a Z structure like this. So this is called as Z scheme or non-cyclic photophosphorylation, and as I have told you its characteristic shape means its shape is looks like a Z, that's why it is termed as Z scheme or non-cyclic photophosphorylation. So what events here takes place during electron transport? I think you have clear your concept. If any doubt then you can ask. So students, remember PS2 observed 680 nanometer and PS1 traps 700 nanometer. The electrons are directly transferred in PS2, whereas from PS1 the electrons are indirectly transferred by
a electron transport system. Clear? The electron acceptor receives, then it gives to electron transport system, then it reaches to the PS1, and here ATP is formed. Again one reduction reaction occurs due to which NADP is reduced, NADP plus is reduced to NADPX plus X plus. Clear? So this is all about your electron transport system.